Good morning students. I am going to describe your first grammar topic of your English grammar, new grammar magic of 7th grade. Let's open your first chapter of noun. First chapter, nouns. What is noun? Noun is a naming word in which we have anything, a name of person, things, place is called a noun. ठीक है, name of any person is person, place, thing, animals is called a noun. Let's have a look on your definition. Nouns, as we have studied earlier, are names of persons, places, animals, things, feelings, thoughts is called a noun. In fact, in short word, the name of anything is called a noun. I hope everybody you have to clear the definition of noun. What is noun? Noun is a naming word which takes place, a name of any person, thing, place, thoughts, etc. is called a noun. Okay, there are 4 types in your book of noun, but basically we have conducted 5 types of the noun: common nouns, proper nouns, collective nouns, abstract nouns. Okay, and the one more is material noun, which we also read in the next page. Common nouns, general names. Common nouns, there are the general names which we have to conduct as a which, whom, to, person, place on that profession. For example, teacher, tree, book. ठीक है, these are general names: teacher, doctor, tree, book, anything as which are called as a general name. But when we conduct a teacher, particular name of that teacher, then that is called a proper noun. So proper noun, particular names: Shalini, India, Noida. ठीक है, means Shalini is the name of, for example, a teacher. India is the name of a country. Noida is the name of a city. ठीक है, बुक का कोई नेम, जैसे कि द हैरी पॉटर, द बुक ऑफ द हैरी पॉटर. ट्री, एनी नेम ऑफ एन ट्री फ्रॉम कोकोनट ट्री. ठीक है, सो दीज आर द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ दैट थिंग्स एंड प्लेसेस एंड पर्सन्स, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. कलेक्टिव नाउन, a group of anything as group of same kind things of persons or animals is called a collective noun. Groups of things of same kind is called a collective noun. Examples: team, bucket, class. ठीक है, टीम किसकी होगी? Group of players is called a team. Bucket, a flowers. ठीक है, then class, a group of students. Next, abstract noun. In abstract noun we count the ideas, thoughts, feelings just like happy, today you are happy, today you are sad. For example, today you are alone at home. या फिर means which feelings you have to show, like anger, आप आज गुस्से में हो, आज नाराज़ हो, आज खुश हो. These are some things which you have to show in the abstract nouns: idea, thoughts and feelings. For example, anger, calm, peace. Clear? Up to here have to clear. One is more materialistic noun. In that we have to count a material. For example, iron, gold, silver. These are count as a noun. Uncountable nouns, which we have to read on next page. Now nouns, there are 2 more things are there: countables and uncountables. Nouns can be countable or uncountable. Countable nouns, that those can be counted. Nouns like people, monkeys, doors, eyes, boys and girls can be counted. We can use numbers of countable nouns. ठीक है ना बच्चे, countable nouns कौन से होते हैं? जिनको आप count कर सकते हो. These are called the countable nouns. 5 people, 2 monkeys, 12 doors, 1 girl, 4 boys. ठीक है ना, आप काउंट कर सकते हो जिस चीज़ को, उसको बोलते हैं countable nouns. Move on next page. Uncountable nouns like water, milk, rice cannot be counted. ठीक है, आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नो. आप मिल्क को काउंट कर सकते हो? नो. सो दीज आर सम थिंग्स विच वी कांट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट आर द अनकाउंटेबल. वी यूज क्वांटिटी फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. क्वांटिटी क्या होती है? अ लिटल वाटर, अ लॉट ऑफ, टू मच, मोर. ठीक है, हम क्वांटिटी में बता रहे हैं कि हमें कितना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी. लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल. इफ वी हैव to use numbers, we usually sum
अदर काउंटेबल नाउन्स विद दीज नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्लास ऑफ वाटर। वो कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ नंबर्स यूज़ करने हैं इन चीज़ों के साथ तो हम कैसे चूज़ करेंगे। 1 ग्लास ऑफ वाटर, 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे 1 वाटर, 2 वाटर, 4 राइस दे दो मुझे, ठीक है, 5 शुगर दे दो, नो, क्रॉस इट। उसके लिए हम लिटल मोर, लॉट ऑफ, टू मच ये वर्ड को यूज़ करेंगे। बट हेयर सी 1 वाटर क्रॉस, 10 शुगर्स क्रॉस, बट यू हैव टू यूज़ 1 ग्लास ऑफ वाटर, 10 kilograms ऑफ शुगर। क्लियर। नेक्स्ट हैव अ लुक ऑन अ डिफरेंस ऑफ द काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स हैव अ प्लूरल फॉर्म, अनकाउंटेबल्स डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। काउंटेबल्स में प्लूरल फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल एस और एस हम यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, बट अनकाउंटेबल्स में कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, नो शुगर्स, नो वाटर्स। डिटर्मिनर्स लाइक ए एंड, वन, फ्यू, मैनी, सेवरल कैन बी प्लेस्ड बिफोर काउंटेबल्स, ठीक है। काउंटेबल में आगे हम मोस्टली डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं, बट डिटर्मिनर्स लाइक लिटल मोर, एज आई टोल्ड यू, क्वांटिटी, वो हम अनकाउंटेबल्स में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ काउंटेबल्स आर कोलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल्स, मोस्ट ऑफ कॉमन एंड कोलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल, बट here is a material noun. Common nouns that name material like silver, iron, gold, wool are uncountables, ठीक है। सिल्वर कितना है, चांदी कितनी है, सोना कितना है, ठीक है, वूल कितनी है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव टू केम इन अ कॉमन नाउन लाइक दैट अनकाउंटेबल्स। प्रॉपर नाउन्स आर मोस्टली अनकाउंटेबल्स, ओके। सम abstract noun, now abstract noun as I told you सच एन आइडिया, ठीक है, आइडिया, थॉट, एग्जाम्पल आइडिया, आई हैव अ आइडिया, ठीक है, मेरे पास कोई एक आइडिया है। थॉट, मैंने अपनी एक सोच बताई आपको कि मैं उस मैटर को लेकर क्या सोचती हूँ। एग्जाम्पल, मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल्स दी, 1 दी, 2 दी, 3 दी, लाइक एग्जाम्पल्स काउंटेबल, ओके। अपॉर्चुनिटी भी आपको 1 मिलेगी या 2 मिलेगी, सो दीज आर ऑल थिंग्स आर काउंटेबल। बट हैप्पीनेस, ग्रीफ, लोनलीनेस, आप कितना खुश हो, हाउ मच यू आर हैप्पी, ग्रीफ, हाउ मच यू सैड, हाउ मच यू आर इन सोरो एंड लोनलीनेस, दीज आर अनकाउंटेबल्स। आई होप अप टू हियर यू आर क्लियर, ठीक है। हम आइडिया, थॉट, अपॉर्चुनिटी, एग्जाम्पल को काउंट कर सकते हैं, बट हैप्पीनेस, ग्रीफ, लोनलीनेस को हम काउंट नहीं कर सकते, दीज आर अनकाउंटेबल, ओके। नेक्स्ट, move on next page, in which formation of abstract nouns, we form abstract nouns by adding different suffix, okay। what is that, इसमें हमने ये फॉलो करना है कि जब भी आपने abstract nouns को फिल करना है, then you have to add the suffix. what is suffix? Suffix are the letters which we have to add on the end of the word and make a new word, clear। for example, here is a word ment, now I am add with enjoy, then enjoyment, so meaning is changed, word is changed by adding the suffix, ठीक है। तो जब भी आपने abstract noun को यूज़ करना है, you have to use with the suffix, not alone इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप इंजॉय इज़ अ डिफरेंट थिंग, इंजॉयमेंट, आपने कितना इंजॉय किया उस चीज़ को, दैट इज़ डिफरेंट, ओके। सो दैट्स वाई द मीनिंग इज चेंज। सफिक्स, क्लियर एवरीबडी? सफिक्स आर द लेटर्स विच वी एड एट द एंड ऑफ द वर्ड to make a new word. Let's have a look on some examples. By adding ment, achievement, enjoyment, government, development, excitement, treatment. Okay. Next, ends, abundance, entrance, performance, ignorance, appearance. By adding ence, dependence, difference, existence, preference, residence. Okay. By adding ance or ence, we make a new word which is called the abstract noun by adding the suffix. Next, by adding al, trial, arrival, proposal, betrayal, refusal, withdrawal. Clear? Next is by adding SIO and admit, admission, decide, decision, conclude, conclusion, omit, omission, divide, division, submit, submission. Next page again of the same for the abstract noun by adding the TION,
act, action, collect, collection, correct, correction, examine, examination, translate, translation, clear, add, addition, declare, declaration. So by adding the TION, we just take a look of a new word. By adding Y, assembly, discovery, inquiry, flattery. URE, departure, closer, pressure, failure. Age, carriage, marriage, breakage, wastage, passage. By adding TH or T, complaint, weight, growth. डाई के साथ हम टी ऐड नहीं करेंगे, TH ऐड करेंगे, डेथ. ठीक है, टू मेक अ न्यू वर्ड. NESS, bitter, bitterness, heavy, heaviness, lonely, loneliness. Here we cut Y as I told you for the नंबर, जेंडर एंड नंबर नाउन्स में हमने पढ़ा हुआ है कि वाई को कट करके हमने IES प्लेस करना है, बट हेयर नॉट IES, वी जस्ट अकॉर्डिंग टू वी हैव टू ऐड NESS. सो कट वाई एंड लोनलीनेस. सेम इम्पटी, इम्पटीनेस, ITY. नेक्स्ट इज ITY, एक्टिव, एक्टिविटी, रियल, रियलिटी, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, विजिबल, विजिबिलिटी, similar, similarity. Okay, next on the page again by adding ans or ans and anc. Ignorant, ignorance, patient, patience, obedient, obedience, silent, convenient, convenience, innocent, innocence. Next CYRYTY. ठीक है, according to word we have to add these words. Certain, certainty, accurate, accuracy, brave, bravery, private, privacy, poor, poverty, efficient, efficiency, loyal, loyalty, vacant, vacancy. Next word is hood. By adding hood, जैसे बचपन, ठीक है ना, बचपन, motherhood, like that. Boy, boyhood, brotherhood, manhood, girlhood, motherhood, womanhood, sister, sisterhood, fatherhood, child, childhood. By adding ship, friendship, membership, parentship, dictatorship, ownership and kingship. Next by adding age, bondage, parentage. Next आप आ गया pilgrimage and usage. By adding CY, agency, efficiency, vacancy. Okay, I hope you have to clear. Next move on your exercise which we already done in your assignments, written assignments. Let's have a look on these things. Argue, argument, expression, expression, enage, enagement, protect, protection, impress, impression, appoint, appointment, agree, agreement, invent, invention. Okay, here we add TH or ITY according to the word. Deep, depth, equal, equality, humble, humility, truth, truth, long, length, visible, visibility, special, specialty, wide, width. Okay, next exercise, fill in the blanks with suitable abstract nouns from the help of with the help box. He left Kuwait after Iraq's invasion of the kingdom. Invasion होता है किसी देश का, किसी देश की सेना का किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना. Many people mistake dash for timidity, politeness. The dash of the winning team at the station was a grand affair. Reception. The patient is undergoing dash at a new hospital near the market. Treatment. The dash of the truth about his real identity shocked everybody. Discovery. ठीक है, clear. Next, I can accept defeat but I cannot tolerate cowardice. The main dash of the city is the fountain in front of the town hall. Attraction. If you are not filled with curiosity, you cannot discover anything. The departure of the train is at 4 p.m. from New Delhi. The dash of the children, laughter of the children could be heard from the main gate. These are the some filling of the blanks which we have to fill with the abstract noun with the help of help box. Next, there are collective nouns. So many examples are given in your book of the collective nouns. The army, an army troop of soldiers, ठीक है, a crew of sailors, band of thieves,
flight of birds. These are some examples which you have to read. Also, a pride of line, a swarm of bees. The following are used things: an album of photographs, a bunch of grapes, bananas, keys, a bunch and bouquet of flowers, a bundle of sticks, a clutch of eggs. These are some examples are there. On next page also, a galaxy of stars, a grove of trees, apple, a bouquet of apple, ठीक है, suite of rooms, library of books, a string of pearls, a trough of glass, ठीक है. Now according to your syllabus, there are exercise are C, E, F and H. Now let's have a look on your H exercise. Fill in the blanks with suitable collective nouns. In the dark night only dash of stars. ठीक है बेटा, आपने ये वर्ड देखने हैं, जो भी आपको पीछे वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर फिल करना है. लाइक आपको किसके बारे में पूछा गया है? स्टार्स के बारे में, तो उसकी क्या आएगी? गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. नेक्स्ट एग्स, क्लच ऑफ एग्स. शी वॉज कैरिंग अ क्लच ऑफ एग्स to the market. As we drove off, we passed by gaggle of geese. ठीक है ना, अब किसका ग्रुप बताया हमने? geese का. नेक्स्ट आपका आ गया, he hid himself in a dash of hay to avoid being caught by the police. Stark, hay. For the culture program, we have invited a dash of terrible dancers. ठीक है, dancers में आ गया आपका troupe. संगीत is so fond of dogs that she adopted the dash of puppies. Now puppies, litter, she found on the street. The dash of chicks always followed the mother hen brood. Since she likes flowers, we should present her a dash of flowers on her birthday bouquet. Whenever I have a time, I have to look at the dash of album photographs. Album. We have a dash full of books. ठीक है, बुक्स में क्या आएगा? लाइब्रेरी. What more do you want in life? Okay, means you have to have a look on the words, which group you have to count on the fill up. According to that you have to fill the collective noun. I hope everybody clear this chapter. Try to revise it at home. Read these abstract nouns at home also. ठीक है, read these definitions also and types also and revise it at rough note.